न्यूयॉर्क की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जानब से अमरीकी रियासत मिनीसोटा से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम अमेरिकन कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर की आइंदा इलेक्शन में भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया गया है। कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर अपने शौहर के हमरा रियासत मिनीसोटा से न्यूयॉर्क आईं, जहां पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अहम नुमाइंदा तंजीम अमेरिकन पाकिस्तानी पब्लिक अफेयर्स कमेटी (APPAC) के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद की रहाइशगाह पर उनके एजाज़ में फंड रेजिंग इस्तकबालिया दिया गया। इस इस्तकबालिये में पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की अहम शख्सियत शरीक हुईं, जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस वुमेन इल्हान के लिए फंड रेजिंग में हिस्सा लिया बल्कि उन्हें अपनी हर मुमकिन सपोर्ट का भी यकीन दिलाया। APPAC के चेयरमैन डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर महमूद आलम, तारक खान और अदनान बुखारी ने कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर की अमरीकी कांग्रेस में मुस्लिम कम्युनिटी और दाखिली व खारजी सतह पर मुसलमानों से मुतल्लक अहम अमूर के सिलसिले में खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। Representative Omar has been supportive and vocal for our government to uphold the rights of all marginalized communities, including Muslims, immigrants, and Pakistani Americans beyond Minnesota. Ilhan Omar was recently in Pakistan and visited Jammu and Kashmir, calling for Congress to take a closer look at the human rights violations happening to Kashmiris, and we are grateful that Representative Omar will work to promote peace and development for both Kashmiris and Pakistanis. Thank you for that. And we have to keep our struggle in the US, become the beacon of light for the democracy and the will of the people, whether it is Pakistan, whether it is India, whether it is Palestine or Kashmir, and we will uphold those ideals along with her and very like-minded person who support her. कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर, जिन्होंने कुछ अरसा कबल पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू व कश्मीर और पाक अफगान बॉर्डर का दौरा किया, का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका का दरीना दोस्त है। दौरा पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। My visit to Pakistan was incredible. My husband Tim and I got to go there for 4 days. We didn't only get to visit Islamabad, but we went to Lahore and we obviously visited Kashmir. But we also went to the Afghan-Pakistan border and visited Afghan refugees and hanged out with little school girls who were in 5th grade, which I never got the opportunity to go to 5th grade. So I congratulated them for getting that opportunity as refugees. But I was incredibly pleased with the generosity of the Pakistani people and the maturity really in saying, you know, your invitation might have come from the previous administration, but this administration is still going to invite you. And you know, we arrived, and within 6 hours we met with every person who was a leader in the country. मसला कश्मीर के हवाले से बात करते हुए कांग्रेस वुमेन इल्हान का कहना था कि 7 से ज़ायद दहाइयों पुराने इस मसले पर दुनिया के दीगर मसाइल की तरह अमरीकी अरकान कांग्रेस के मज़ीद मुतहर्रिक किरदार की ज़रूरत है, और मैं इस सिलसिले में अपना हर मुमकिन किरदार अदा करूँगी। So I think our focus has been in trying to push for hearings, for inquiry, to raise the question, to push the State Department to address, to make sure that people understand the issue of Kashmir is a really dire one. There's obviously a lot of conversations that we get to have about the occupation of Palestinians, but we don't talk about what's happening to Kashmiris. And it's, you know, more than 70 years each side, and it's a really important one to talk about too. 39 साला सोमाली निजाद अमरीकी इल्हान उमर को अमरीकी कांग्रेस में पहली मुसलमान कांग्रेस वुमेन मुंतखब होने का एजाज़ हासिल है। उनका कहना है कि कांग्रेस में उनके बेबाक किरदार की वजह से उनके सियासी हरीफ उनके खिलाफ इंतखाबी मुहिम में वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी कांग्रेशनल इलेक्शन में उनकी आइंदा कामयाबी को यकीनी बनाने में उनकी हर मुमकिन सपोर्ट करे। मोहसिन ज़हीर, चैनल 5, न्यूयॉर्क।